हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है सेकंड पार्ट आईआईटी जैम फिजिक्स 2022 के ऊपर। इसमें हम लोग 11 से 20 तक का सवाल के ऊपर काम करेंगे। सो 11 में क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू यू टू द पावर साइन एक्स इज एक्सपेंडेड एज द टेलर सीरीज इन एक्स अराउंड एक्स इक्वल टू 0 इन द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स एन इन द वैल्यू ऑफ ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू। तो यहाँ पर एक टेलर सीरीज का इस्तेमाल किया गया है, जिसका हम लोगों को कुछ टर्म के ऊपर काम करना है, जो है एफ ज़ीरो एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ज़ीरो, सॉरी एफ एक्स डैश ज़ीरो, सॉरी, और एक्स स्क्वायर दिस बाई फैक्टोरियल टू। यहाँ पर ए ज़ीरो का वैल्यू है एफ ऑफ ज़ीरो, ए वन का वैल्यू है एफ डैश ज़ीरो और ए टू का वैल्यू है एफ डबल डैश ज़ीरो बाई टू फैक्टोरियल। ठीक है, अगर एफ एक्स है ई टू द पावर साइन एक्स, एफ एक्स है ई टू द पावर साइन एक्स, ओके। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, cos x इंटू ई टू द पावर साइन एक्स होगा, काफ़ी आसान है। एफ डबल प्राइम एक्स डबल डेरिवेटिव्स माइनस साइन एक्स ई टू द पावर साइन एक्स ई टू द पावर साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। सो ए ज़ीरो यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर साइन ज़ीरो वन, ए वन हो जाएगा ई टू द पावर साइन ज़ीरो इंटू कॉस ज़ीरो, सो वो भी वन, और ए टू होगा माइनस साइन ज़ीरो ई टू द पावर ज़ीरो वन, सो ई टू द पावर ज़ीरो वन cos ज़ीरो वन टू फैक्टोरियल ऑफ हाफ। So a0 plus a1 plus a2 is 1 plus 1, so 2.5. So आंसर है C। 12 की तरफ बढ़ेंगे। Consider a unit circle C in the xy plane centered in at origin. Then the value of the integral, okay, traversed anticlockwise. Okay. तो चलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। इंटीग्रल को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m dx minus m dy फॉर्म। On comparing we get m equal to क्या है भाई अपना, m is this sin x this and this is n with a minus. So del m del y क्या है, माइनस वन, del n del x क्या है, ये भी माइनस वन। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं सोल्यूशन m dx m dy. So y constant and without x, so integration of sin x minus y dx plus minus of sin y dy. Okay, so minus cos x minus xy plus cos y. So the above integration lies on the circle which center is at origin. So now this is the origin, center is at the origin. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x equal to 0, y equal to 0, so minus cos 0 minus 0 plus 0 plus cos 0, so minus 1 plus 1 0, so this makes option number A correct. 13 नंबर में चलेंगे। करंट थ्रू अ सीरीज ऑफ आरएल सर्किट पास कर रहा है सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट एप्सिलॉन एंड एल डी आई डी टी प्लस आई आर इक्वल टू दिस। वैल्यूज दिए हुए, इनिशियल कंडीशन अगर ऐसा है, सो द करंट का वैल्यू निकालना। ओके, अगर जीरो इनिशियल कंडीशन हुआ, द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर एल, अगर इंडक्टर एल हुआ एंड इन सीरीज with R at any time t is given,
by I equal to I0 1 minus e to the power 1 minus tau. Okay, and I equal to epsilon r 1 minus e to the power r t by a. सारे वैल्यूज यहाँ दिए हुए हैं, सिर्फ मुझे वैल्यू डालना है. 1 by 10 to the power 3 e minus 10 q 10 to the power minus 6 10 to the power minus 3. So 10 to the power minus 3 e1 a equal to this is same into a. So finally this value is option number C. अब चलेंगे 14 में तरफ. An ideal gas in the equilibrium at temperature T expands isothermally to twice as of its volume. If delta S, delta U, delta F denote the changes in its entropy, internal energy and Helmholtz free energy respectively, तो ये कौन सा सही होगा? So gas expanding isothermally का मतलब है T equal to a constant. तो dt हो जाएगा 0, du हो जाएगा 0 क्योंकि du का वैल्यू है म्यू cv dt. तो वो dt यहाँ मल्टीप्लाई होकर 0. So let's say the initial volume be v और final volume हो गया 2v. So the system is expanding, तो entropy will increase for del s greater than 0. So ये दो condition are satisfying only in option number B. So B is the correct answer. 15 नंबर में चलेंगे. In a dilute gas, the number of molecules with free path length greater than equal to x is given by n, and in 0 this molecule, and the total number of molecules of lambda is in the mean of the free path. The fraction of molecules with the free path length between lambda to 2 lambda के बीच में क्या होगा? So it is given that n x equal to n0 e to the power minus x by lambda. So fraction of molecules with free path between lambda and 2 lambda, तो मतलब इंटीग्रेशन जो होगा तो ये दो रेंज के बीच में हम लोग लेंगे n dx डिवाइडेड बाय टोटल अगर होगा 0 to this और lambda to lambda n0 e to the power minus x by lambda dx and 0 to infinity n0 e to the power x by lambda dx. ओके, सो इसी वैल्यू को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. सो और वैल्यू अगर आ गया तो e टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा ये लैम्डा टू 2 लैम्डा यहाँ नीचे में होगा एक्स बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा 0 to infinity. So e to the power minus x by lambda e to the power minus डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं माइनस 2 लैम्डा बाई लैम्डा माइनस लैम्डा बाई लैम्डा इधर को होगा माइनस इंफिनिटी माइनस e to the power minus 0. So e to the power minus 1 by e to the power minus 2 in this case. So e to the power e minus 1 by e square. So option number D is correct. 16 नंबर में चलेंगे. Consider a quantum particle trapped in a one-dimensional potential well in the region minus L by 2 to plus L by 2. Infinitely high barriers है और the stationary wave function for the ground state ये है दिया हुआ. The uncertainties in momentum and positions satisfied. ओके, तो इसमें क्या आएगा? ये दोनों गिवन है. स्टेशनरी वेव फंक्शन को पहले हम लोग लिखेंगे 2L cos pi x by L. ठीक है. सो द पोटेंशियल सिस्टम ऑफ वेल सिमेट्रिक. इसको अगर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा. सो x इक्वल टू माइनस एल बाई टू, ये हो जाएगा प्लस एल बाई टू और ये है y. अब हमें क्या पता है? ये है दिस इज दिस बाई 2m m 2m d स्क्वायर
तो यहाँ हमारा जो वैल्यू आएगा तो कुछ इस तरीके से है। अब a इक्वल टू एल है तो ये वैल्यू थोड़ा चेंज होके आ जाएगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, सो डेल्टा पी स्क्वायर, बाहर में रियल फंक्शन में ये जीरो होता है, सो डेल्टा पी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ दिस that is pi square square pi a by l। अब कोई भी in the state of uncertainty is calculated at the midpoint of the potential well, so यहाँ पर ये भी जीरो होगा, so अगर ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन क्या होगा, सेम तरीका, सॉरी अंदर फिर इस वाले में बाहर, ओके ये भी जीरो होगा, सो रूट ओवर में ये पूरा जाएगा, सो डेल एक्स इक्वल टू square by 12 1 minus 12 by 2 pi square। Now delta x equal to L by 2 3 1 minus 12 2 pi square and L is less than 2 3, okay, so this is the correct option 16। next 17, consider the particle of mass A moving in a plane with a constant radial speed and a constant angular speed, दोनों है, so the acceleration of the particle हमें निकालना है। so radial speed constant है, prime is 0, angular speed is constant तो ये भी 0। so acceleration of a particle को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2r dot theta dot and this 0 r theta square r 0 2r dot theta hat, so then r theta hat square r hat and theta hat, तो इस हिसाब से लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 18 में चलेंगे, द प्लैनेट ऑफ द mass A moves in the elliptical orbit, maximum and minimum distance from sun and is r and r, let g denote the universal gravitational constant है, m greater than by m से बहुत ज़्यादा मास है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सन निकालना है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ये सन है, this is r and this is r, so d to u d theta square u is minus m l square u square f of 1 by u for f equal to k u square। so अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, l square m k by f is 1 plus 1 to e l square m k square cos theta, ठीक है, so l square m k f 1 plus root over 1 to e l square m k square cos theta, इसको पहला। now अब l स्क्वायर का अगर लेंगे m k r, so 1 e l square m k square, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2, where f equal to r max theta equal to 180। तो सेकेंड फर्स्ट वाले इक्वेशन से अगर यहाँ पर डाल देंगे, सो l स्क्वायर m k r 1 2 e l square m k square, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। so adding 2 and 3 हमें क्या मिलेगा, l square m k r square m k capital R
इज इक्वल टू 2। तो थोड़ा कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर बाई एम के, 1 बाई स्मॉल आर 1 बाई कैपिटल आर इक्वल टू 2। सो एल इक्वल टू रूट ओवर 2 एम के आर कैपिटल आर प्लस। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू जो के है जो है जी एम एम, तो क्या है एल एम 2 जी एम कैपिटल आर स्मॉल आर आर प्लस। सो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट।